Ji, so we can now start. We have a couple of participants. And before we start, I think थोड़ा सारा introduction discuss कर लेते हैं. Why NTS GAT, what the GAT is, और आप में से काफ़ी लोग लम्स अप्लाई करना चाह रहे हैं एंड आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा कि whether I should be taking GRE, GMAT or the graduate assessment test which is conducted by NTS. So GRE और GMAT के differences तो I covered in the very first session and I hope most of you were there as well. So GRE और GMAT का तो आपको फ़र्क काफ़ी हद तक समझ आ गया. But अब ये GAT क्या चीज़ है? GAT, it is often known as the local GRE. So there is a testing body called the NTS in Pakistan जो कि ये test conduct कराते हैं for candidates who are applying to graduate programs as well as different HEC scholarships. So lumps के अंदर भी if you're applying for a graduate level program तो GAT is also acceptable. अगर हम स्लाइड्स पे आके थोड़ा सारा इसका एक बैकग्राउंड देख लें एंड देन वील वॉक यू थ्रू द सिलेबस एज वेल. सो अगर आप स्लाइड्स पे देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है कंडक्टेड बाय द एनटीएस, ये दिया क्यों जाता है? सो यस, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स होते हैं वो आपसे एडमिशन टेस्ट मांगते हैं वेरियस किस्म के. Most international universities rely on GRE or GMAT to evaluate the candidates, but within Pakistan, GAT is one of the most popular ones. Apart from just applying for graduate level admissions, HEC की अक्सर scholarships available हैं पाकिस्तान में. So उसके अंदर when they have to evaluate कि आपकी ranking कैसी है as compared to the rest of the candidates, they also use it for evaluation इन डिसाइडिंग आपको स्कॉलरशिप मिलनी है या नहीं मिलनी. सो एचईसी की स्कॉलरशिप्स में भी ये यूज होती है. अगर मैं गैट जनरल टेस्ट की बात करूं तो इट हैज 4 सब कैटेगरीज टू अकोमोडेट टेस्ट टेकर्स फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स. अच्छा, अब स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एज अ प्रिंसिपल wants to offer a level playing field to all candidates. इस बात का क्या मतलब है? So जब भी हमने standardized testing की बात की, I kept on saying it's not just a test of math and English. They're not interested in testing you on grade 6 math, grade 7 math, or even जो आप लोगों ने metric, high school, O level में verbal section पढ़ा है, उस पे आपको primarily test करने के लिए they're not interested. What they're interested in is evaluating how well do you respond under pressure. What they're interested in is finding how resilient you are. What they're interested in is finding out how well do you process data. So प्रायर नॉलेज की तो ज़रूरत नहीं है. उसी वक़्त अगर आपको कोई डेटा दे दिया जाए, आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, उसमें से इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और रेलेवेंट सवालों के जवाब देते हैं. अब यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स का ये कंसर्न होता था कि जी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के अंदर फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स जो कि मेरा फोटे है, अक्सर लोग कहते थे कि जी मैथ का तो हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है. सो वी आर कमिंग फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, वी आर कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. हमने तो मैथ बस मेट्रिक तक पढ़ी थी, जब तक कंपल्सरी थी. उसके बाद जहाँ पे ऑप्शन मिली वी ऑलवेज डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर मैथ. सो फिर उनको दे ऑलवेज फेल्ट एट अ स्लाइट डिसएडवांटेज. इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट्स से इंजीनियरिंग कोहोर्ट के हैं. दे से कि हम तो मैथ ही पढ़ते आए हैं, हमसे वर्बल पे इतनी ज़्यादा असेसमेंट क्यों की जाती है? इट्स नॉट आवर मदर लैंग्वेज. हमसे इतनी मुश्किल वोकैब्युलरी क्यों टेस्ट की जाती है? दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अनफेयर. अक्सर लोगों का ये कंसर्न होता था. So in one way correct, but also in one way incorrect because like I said, इसके अंदर ज़्यादातर information आपको उसी वक्त given होती है और आपने उसी टाइम पे majority information को process करना होता है. So what does the GAT do to accommodate all these concerns? GAT ये करता है, वो कहता है कि we understand that people come from various different backgrounds and in order to accommodate people from different backgrounds, what we will do is कि टेस्ट तो हमने वर्बल, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग ही करना है, बट हम सवालात की वेटेज चेंज कर देंगे. सो फॉर एग्जांपल जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको क्वांट के, मैथ के ज्यादा जवाब आएंगे, वर्बल के और लॉजिकल रीजनिंग के थोड़े कम आएंगे.
सिमिलरली जो लोग नॉन मैथ बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको मैथ के कम आएंगे और वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग के थोड़े ज्यादा आ जाएंगे. सो दिस इज हाउ दे अकोमोडेट. एक इसके अंदर और भी कैटेगरी है, गैट जनरल कैटेगरी डी वी कॉल इट. पीपल हु कमिंग फ्रॉम मदरसा बैकग्राउंड, उनके लिए भी अलहदा वेटेज है. सो सब्जेक्ट एरियाज यही तीन रहेंगे: मैथ, इंग्लिश एंड एक और नया सब्जेक्ट एरिया, आई वोंट से न्यू बट समहाउ लिंक्ड टू मैथ एज वेल, लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक होता है, वी विल गो थ्रू इट इन अ कपल ऑफ मिनट्स, एंड दूसरा एनालिटिकल राइटिंग जैसे आपने पढ़ा उसके अंदर रीजनिंग के कुछ सवालात होते हैं. सो जो मदरसा बैकग्राउंड से भी आ रहे होते हैं उनके लिए भी अलग अलग वेटेजेस डिसाइड की गई हैं. सो दिस इज गुड इन अ वे बिकॉज यू, if in case you feel at a disadvantage coming from a non-math or a math background, that request can be accommodated. And when you're applying, when you're registering for the GAT general test, you can choose the relevant category. So चार categories होती हैं, इसी तरह से आ रही होती हैं: GAT general A, GAT general B, GAT general C and GAT general D. So और उसका आगे explanation होता है: A are the ones who are coming from, let's say, science and business background, B are the ones who are coming from a non-science background. So abhi we'll have a look at those categories as well. So you choose the relevant category that you're coming from and आपको उसी तरह से अलग-अलग weightage दी जाएगी. अब आगे चल के थोड़ा सारा बात करते हैं कि हाउ इज द टेस्ट स्ट्रक्चर्ड, कितने सवाल होते हैं, कितना टाइम होता है, पेपर पे होता है या कंप्यूटर पे होता है. सो इफ यू रिफर टू द स्लाइड्स वी कैन सी दैट द टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ गैट इज 2 hours. So as compared to the GRE and GMAT, this is relatively a smaller test. ठीक है, so इसके अंदर आपको 2 घंटे के लिए बैठ के एक पेपर बेस्ड टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ता है. द रिजल्ट इज वैलिड फॉर 2 years. अच्छा, सो पेपर बेस्ड टेस्ट जो लास्ट बुलेट पॉइंट है, आई लाइक टू टॉक अ बिट मोर अबाउट इट. इसको लिंक करता हूं मैं अक्सर सवाल जो मुझे आते हैं रिलेटेड टू वेदर देर इज नेगेटिव मार्किंग ऑन द GRE और नॉट, वेदर देर इज नेगेटिव मार्किंग ऑन द GMAT और नॉट. व्हाट डू यू गाइस थिंक, इज देयर नेगेटिव मार्किंग? क्या ख्याल है, अभी तक क्या assumption है? थिंक अबाउट इट. नेगेटिव मार्किंग का कुछ लोगों ने पूछा है, शायद कुछ के दिमाग में ये सवाल ना आया हो. So I would say, okay, so the answers that I'm receiving mostly on the chat are no. I would say yes, there is negative marking. How? So when I explained the difference between GRE and GMAT, I said that they are computer adaptive tests. GRE जो है that is a section adaptive test and GMAT जो है that is a question adaptive test. So for example, let's say I'm a test taker, मैंने पहले सवाल का जवाब गलत दे दिया. ठीक है, पहले सवाल का जवाब मैंने GMAT में गलत दिया तो अगला सवाल मुझे आसान आएगा बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन अडेप्टिव टेस्ट. वो मेरे कैलिबर के साथ क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी एडजस्ट करेगा एग्जामिनर जो है. सो अगला सवाल अगर मुझे आसान आएगा उसको मैं सही भी सॉल्व कर लूंगा, इवन इफ आई सॉल्व इट करेक्टली मुझे उसके कम वेटेज मिलेगी. सो इन अ वे यस, आई एम बीइंग पेनलाइज्ड फॉर आंसरिंग अ क्वेश्चन रॉन्ग बिकॉज वो मेरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस को चेंज करता जा रहा है रियल टाइम बेस्ड ऑन द लॉजिक इन द कंप्यूटर. एंड देन अगर आसान सवाल आ रहे हैं तो मुझे उसके कम पॉइंट्स मिल रहे हैं आंसरिंग देम राइट इवन. तो यस, इन अ वे आई एम बीइंग पेनलाइज्ड. बट व्हाट हैपेंस ऑन द गैट? गैट के अंदर तो देयर इज नो कंप्यूटर, दे कांट एडजस्ट योर क्वेश्चंस रियल टाइम. सो एक दफा जो क्वेश्चन पे सवाल छप गए, जो प्रिंट हो गए, जो आपको पेपर मिल गया, पूरा पेपर वैसे ही रहेगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन करेक्टली और इनकरेक्टली इन द स्टार्ट. बाकी सवाल तो वही रहेंगे बिकॉज यू आर अटेम्प्टिंग इट ऑन पेपर. सो अगर इसको थोड़ा इनडायरेक्टली बात की जाए तो GRE और GMAT के अंदर एक लिहाज से नेगेटिव मार्किंग होती है, indirectly penalize आप हो रहे होते हैं, but on the GAT there can possibly be no negative marking because it's a paper based test. ठीक है, चले आगे चलते हैं. आई होप अभी तक एक बिग पिक्चर व्यू आपके लिए क्लियर हो गई है. So these are the sub categories that I was talking about. GAT जनरल A की अगर हम बात करें, बिजनेस एंड इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, so for all of you who are coming from a business background or an engineering background, the good news or the bad news for some in this case is कि आपकी जो verbal की weightage है और quant की weightage है वो 35% split के हिसाब से है.
So 35% of the questions that you will see on the test will be from verbal reasoning. 35% of the questions that you will see will be from quantitative reasoning, and 30% will be related to analytical reasoning, जिसके अंदर लॉजिक के भी सवाल होते हैं. अगर मैं दूसरे कोहोर्ट की बात करूं, आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, व्हाट यू कैन नोटिस हियर इज कि यहाँ पे क्वांट का पोर्शन कम हो गया है, वेटेज कम हो गई है. ठीक है, सो क्वांट का 30% हो गया है, वर्बल 50% हो गया है. एंड आर्ट, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, at times they're not used to solving a lot of logical reasoning problems. So उनके लिए analytical reasoning की भी weightage कम है, 20% है. Then there is another category, agricultural sciences, biological sciences. So ये जो category है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि verbal का portion quant से ज़्यादा है. And rightly so, because again, this group belongs to an area who are not exposed to a lot of mathematical problems, who do not solve a lot of quant problems in their undergraduate or other courses that they have to undertake. So उनके लिए quant का portion कम है and verbal का portion ज़्यादा है. Religious studies, madrasa background, category G of the GAT, like I said, यहाँ पे भी अगर आप notice करें, verbal reasoning ज़्यादा है, 50%, quant and analytical reasoning 30 and 20% respectively. So total अगर 100 marks का आपका paper होता है, so those who are coming from a madrasa background can expect to see 50% of the questions on verbal reasoning. So 50 marks तो आपके verbal reasoning cover कर रहा है, 30 marks आपके quant cover कर रहा है, and 20 analytical reasoning cover कर रहा है. ये 3 major sections भी हैं. We'll walk you through each one of these sections as well. So within the verbal क्या चीजें हैं, within the quant क्या चीजें हैं, Mavra and myself will be talking about these, and analytical reasoning के अंदर logic के किस तरह के सवाल आते हैं, उसको भी हम broadly जरूर देखेंगे ताकि आपको एक overview मिल जाए. I think it's now time to look deeper into the curriculum, and Mavra, if I can request you to walk them through what the curriculum looks like. Yes, thank you, Haroon. So we have the 3 different test sections, as Haroon has already discussed them in detail, and their weightage for each of the 4 categories. Now let's look at the verbal reasoning section, which is very similar to the GMAT and GRE test that you take. So in the GAT verbal reasoning section, you have the vocabulary section, much like the GRE text completion section, and then you have the grammar portion, which is also similar to the sentence correction in the GMAT and the text completion in the GRE. And then you have the reading comprehension, once again similar to the GMAT and GRE. Then you have these 2 sections, which are your math-based sections, quantitative reasoning, you have arithmetic, you have algebra, you have geometry, you have data processing, and then you have analytical reasoning, logical, critical reasoning. Now, these kind of questions, they are not math, not science, they are based on logic. So this is deductive and inductive logic, 2 categories, 2 further categories of analytical reasoning, and the questions are based on logic actually. So these are the 3 categories, and we are further going to dig in deeper to find out the details about these 3 text sections in the next few minutes. So verbal reasoning, the first section, vocabulary, is the weightage for vocabulary is 25%, and you have these 3 topics on which you're tested. The first one is prefix and suffix, and the second one is analogies. I'm going to introduce you to each one of them, and then the third one is antonyms and synonyms. So prefix and suffix, what exactly is a prefix, what exactly is a suffix? In case of a prefix, this is a little, we can say it's not a word, it's a little, these are letters that are actually added before a word to change its meaning. For example, if I add function, if the word is functional, and if I add dis, dis, so it becomes dysfunctional. The entire meaning of the word completely changes. It becomes the opposite of functional, dysfunctional. So this is an example of a prefix. Pre, as the name suggests, it's added before a word begins to change its meaning and to completely change the context of how the word is going to be used in a sentence.
Now a suffix. A suffix is added to the word, to the end of the word to change its meaning. For example, we have a word hope. If I add full to it, it becomes hopeful. FUL is the suffix in this case. If I add less to it, it becomes hopeless. So the entire meaning changes and it becomes a suffix in that case. So they make a lot of difference to the word, to the understanding of its meaning, and prefixes and suffixes are very important from that point of view. Then the second thing on which you're tested in your vocabulary section is analogies. In this case, you have words. You have to understand their meaning. There are comparisons between words, and you have to understand how that comparison is done, on what basis it is done, to further clarify what is or explain something. So this is where we use analogies. And then we have the third category, antonyms and synonyms. Antonyms and synonyms are also very important from the point of view that an antonym is is an opposite of a word. For example, good and bad. Bad is the antonym to good, and so same goes for good to bad. Then synonyms, two words having the same meaning. So this means that we have any two words. Just let's take an example of plain or clear. Plain, when something is clear, and clear is when something is, lucid and understandable. So these two words are like synonyms to each other, plain and clear. So this is another category on which you're tested for your vocabulary section. Now coming to the grammar part of the verbal reasoning section, and the weightage is 40%, and you have, which is more than the vocabulary part of the verbal reasoning section. So the first part on which you're tested is the tenses and parts of speech. We talked about tenses earlier when we were discussing the GRE and GMAT grammar sections. And much like the GMAT and GRE grammar part, you have the tenses over here also. So you're tested on their use. You're tested on the use of parts of speech, nouns, pronouns, verbs, adverbs, prepositions. These are all parts of speech and their categories. Then you have conditionals, and then you have functions. Now, what are conditionals? Conditionals may refer to the mood of a verb and how it is used. For example, I should eat. So should is telling the mood of the verb. What exactly is the mood of the verb? So this is used in different clauses, and there are various categories of this. And then functions. Functions are basically the parts, the critical, the most important parts of a sentence. For example, subject, object, indirect object, adverb used in the sentence, the adjective or the noun used in the sentence. And those are the important parts that make the sentence clearer in its meaning. So we call them functions. And then lastly, you have the comprehension category, which has a weightage of 35%. And that's obviously more than the vocabulary section, and the weightage for it is less than 5% less than the grammar section. So grammar holds the most weightage, whereas comprehension holds 35%, and last comes the vocabulary section. So this is all about verbal reasoning. And now we are going to look at an example of analogies. Here we have an example question, and we have to decide which one of these is going to be the answer for the analogy that's given on top. Height to mountain. Now, height to mountain, basically, this is a characteristic of a mountain, a trait of a mountain. Let's look at the rest of the examples and see which one matches the connection that height makes with mountain. So the first one is depth to trench. And then the second one is shade to tree. Third one is weight to age. D, speed, highway. E, mineral, mine. Now, in case of height to a mountain, as we can see, height is something that can be measured. So in that case, option B and option E are not going to be selected because we cannot measure the shade, we cannot measure mineral for mine. So we are left with options D, and we are left with option A. So, and C also. Now, in case of C, weight and age, they are not clearly related to each other, because obviously weight is another characteristic, whereas age is a completely different characteristic. Height and mountain are related to each other. Now D, speed and highway.
when we talk about speed, we're not referring to a length of something, the measure of the length of how long something is. Whereas in case of depth of a trench, we do measure the length, right? And that is the case with height of a mountain also. We measure the height. So in this case, the most appropriate answer for this analogy is going to be option A, and that's going to be the right answer. Now we take a look at the next example, which is an antonym. As discussed, an antonym is the opposite of a word. The word is boorish, and the options are childish, well-mannered, weak-minded, unique, and concealed. This is a vocabulary section, so of course you need to have a good command on your vocabulary to understand the meaning of the word in context. So there is no sentence. In case of the GRE, you had a sentence and you had to identify what exactly was the word that was being used in the sentence in the context. But here we just have the word. So it's a direct word and we have to identify the meaning of the word. So boorish actually means somebody who is bad-tempered, not well-mannered, ill-mannered actually, coarse actually. So the right answer for this is going to be well-mannered, because we are looking for the opposite of this word, and that is going to be well-mannered. Let's take a look at the next question. Now, this is the sentence completion question that we have, and we have some options, and we have to fill the blank with the best possible answer. So let's read the sentence. Either the surfing at Moi is dash, or I went there on an off day. So as the sentence suggests, the word has to be something that shows that the person was not very happy with his experience of surfing, right? So let's look at the options now. Option A, consistent. B, thrilling. C, invigorating. D, overrated. And E, scenic. Rest of the terms, consistent, thrilling, invigorating, and scenic, they are all showing a positive perspective of his experience of surfing. Whereas the word overrated, if you insert it in that blank, it's going to make perfect sense. Either the surfing at Moi is overrated, or I went there on an off day. And I can see that people are coming up with answers, which shows that you understood the sentence that was there. So great job. All right. So this was the right answer. Now we look at the sentence correction question. Doctors have frequently noted a relationship between overweight plus hardening of the arteries. So these options A, B, C, D, and E refer to the blanks that we have, to the underlined parts that we have. Have is the first one, frequently is the second one, plus is C, and off is D, and no error is E. So in this case, everything seems fine except for the word plus. Doctors have frequently noted a relationship between overweight plus hardening of the arteries. So this seems like an addition, whereas we're talking about something that relates to the overweight people and then the hardening of the arteries. So in this case, the right answer is going to be this word plus that we need to correct. We could replace it with a conjunction or with a connective. Okay, next we have quantitative reasoning, and I would like Haroon to explain this in further detail. Sure, Mavra, thanks. So before I move on to the quant section, what I was observing while Mavra was walking you through the verbal section, within the verbal section, आपने notice किया होगा, like Mavra mentioned, कि vocabulary है, grammar है, and comprehension related जो passages होते हैं. So यहाँ पे भी what the GAT does is it accommodates people in a very efficient manner. How? So vocabulary ऐसी चीज है जिसके अंदर you have to put in hard work. अगर आपकी over the years चलें establish होगी, well and good. But if you're trying to learn vocabulary for the sake of a test, then it can be quite a difficult task, I think, Mavra. So बहुत ज़्यादा words याद करने पड़ते हैं, लंबी लंबी किताबें. So उसकी weightage अगर आप देखें, it's only 20%. Which to me was also a surprise, because this is how these testing bodies who are conducting the test, they want to clearly send a message that we're not trying to test you on basic math and English. We're trying to test if, number one, you can put in hard work, and then it's about your behaviors during the test. So मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ because most of the questions that I've been receiving from day one are related to content.
यस कंटेंट को जरूर प्रिपेयर करें, बट जिस चीज को प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत है, एंड बिलीव मी दिस इज कमिंग फ्रॉम 7-8 years of experience and teaching the standardized testing, what helps more in any standardized test is uh, practicing in a timed environment, locking yourself in a room and pura test attempt करें, just because you want to increase your speed, just because you want to be comfortable with a certain type of test. So content को तो हम review कर ही रहे हैं, but keep all this in your mind as well. So quant section पे अगर हम वापस आए, quant के अंदर there are 4 sub categories, सही है? So if you can see my slide, within the quantitative section 4 categories हैं. The first one is arithmetic, ठीक है? शुरू में मैंने कहा था दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली नोन एज द लोकल जीआरई. सो लोकल जीआरई, अगर हमने जब जीआरई की बात की थी, हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे. दीज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टॉपिक्स, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिलेबस टू द जीआरई. सो अरिथमेटिक की जो वेटेज है दैट इज 33%, ठीक है? जो अलजेब्रा है विच इज द सेकंड पार्ट विद इन द क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसकी भी वेटेज 33% है. सो अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा 33% ईच, एंड देन देयर इज ज्योमेट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग 17% ईच. सो ज्योमेट्री के अंदर you can be tested on different shapes. You can be tested on 2D shapes like square, सर्कल, ट्रायंगल, इनके बेसिक एरियाज क्या होते हैं, और इन केस ऑफ 3D शेप्स उनका वॉल्यूम क्या होता है, एंड सरफेस एरिया किस तरह से निकल सकता है. सो बेसिक फॉर्मूलाज एंड टेस्टेड वेरी डायरेक्टली, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते. Data processing is just like the data processing in the GRE. So you will be given a table, you will be given a graph, you will be given a pie chart, any sort of diagram जिसके अंदर से कोई data extract किया जा सकता है और आपसे सवाल पूछा जाएगा related to the data. अक्सर percentage इसके topic को इसके साथ link किया जाता है. Again, because it's very relevant to what you will study when you get to a graduate level program inshallah, or even if you're in your corporate life or business whatever. So ये data processing तो वहाँ भी आपके साथ ही चल रही होगी, I'm sure. Arithmetic की अगर हम further बात करें, which is the first of the 4 categories, इसके अंदर the topics that we've covered so far काफी हद तक वही आते हैं. So ratios है, percentages है, बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आती है, जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाली सारी चीजें भी आती हैं. दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है? हमने शायद बल्कि थोड़ी ज्यादा डिटेल में कवर कर लिया हो. यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई वुड से गैट के अंदर व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज नॉट वेरी हाई. नाउ विद इन अलजेब्रा आपको सेट्स पे टेस्ट किया जा सकता है, आपको ग्राफ्स पे टेस्ट किया जा सकता है, फंक्शंस पे टेस्ट किया जा सकता है. विद इन फंक्शंस देयर आर लीनियर फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस. लीनियर फंक्शन वो होते हैं जिसके अंदर x की मैक्सिमम पावर 1 रहती है. सो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है y is equal to 2x plus 5. दिस इज अ लीनियर फंक्शन. क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? जहां पे x की मैक्सिमम पावर कैन बी 2 is 2, ठीक है? सो y is equal to x square plus 2, y is equal to x square plus 5. फिर इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करना, फैक्टराइजेशन करना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि पहले जो 2 पोर्शन है जो 66% कवर कर रहे हैं, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, ये आपका 66% कवर कर रहे हैं. इसके अंदर टॉपिक्स छोटे-छोटे हैं बट ज्यादा हैं, ठीक है? मुश्किल ज्यादा नहीं है, बट द विड्थ इज स्लाइटली ग्रेटर देन द जीआरई आई वुड से, ठीक है? सो थोड़े ज्यादा किस्म के सवाल टेस्ट किए जाते हैं, बट द गुड न्यूज इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा मुश्किल नहीं होता. सो ये एक हमने ब्रॉड ओवरव्यू देख लिया कि जीमैट के अंदर कौन से सॉरी एनटीएस गैट के अंदर कौन से 4 किस्म के हमारे पास टॉपिक्स होते हैं विद इन द क्वांट पोर्शन एंड उनकी रिस्पेक्टिव वेटेजेस क्या हैं. सो नाउ यू आल्सो नो कि अच्छा फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट टू स्ट्रांग इन ज्योमेट्री, सो only 17% of the questions will come from geometry, and quant हो सकता है आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वैसे ही 30% हो, तो then that contributes very minutely to your overall score. So this is something to keep in mind when you are deciding which test to take. Acha ji. So I also wanted to do a couple of questions like Mavra did with you, just to give you a flavor. It's not like we're starting a topic from scratch or learning all the basics of this particular topic, but I wanted to show you the level of difficulty and maybe solve it with you guys as well. So algebra ka sawal hai. The question statement is the sum of the digits of a 2-digit number is 7.
Okay, so I know that there is a 2-digit number. अगर मैं दोनों digits को add कर दूं तो the sum becomes 7. If the digits are reversed, ठीक है, so for example अगर 21 है तो वो reverse होके 12 बन जाएगा. The new number and the new number is increased by 3. It is equal to 4 times the original number. Then what is the original number? ठीक है, so सुनने में मतलब इट माइट बी इंटिमिडेटिंग, ठीक है, सो लंबी सी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, एक 2-डिजिट नंबर है, मुझे तो ना पहला डिजिट पता है ना दूसरा डिजिट पता है, और उसने मुझे साथ 3 कंडीशंस भी दे दी हैं कि नंबर को स्वैप करें, डिजिट्स को यानी कि रिवर्स करें, फिर उसमें 3 ऐड करें, वो फिर 4 टाइम्स बन जाता है. तो दिस साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्किंग, दिस साउंड्स लाइक 4 पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, एंड बहुत मुश्किल सवाल है. सो पहला इंप्रेशन यही आता है, आई अंडरस्टैंड. But what can be a smart way to do it? ठीक है, so without getting into a lot of debate of hard work versus smart work, एक थोड़ा सारा अगर हम इसको सोचें कि अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करें तो यस हमें अलजेब्रा में जाना पड़ेगा, हमें 3-4 इक्वेशंस डिराइव करनी पड़ेंगी, बट व्हाई वुड यू वांट टू गो थ्रू ऑल दैट एफर्ट व्हेन यू हैव द आंसर चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू? You have the question in front of you and you have the answer choices in front of you. Question के अंदर आपके पास conditions given हैं जो question आपको कह रहा है satisfy करने के लिए. Why don't you pick each option and check कि वो सारी conditions को verify करता है, satisfy करता है या नहीं करता? You will automatically eliminate all incorrect answer choices और जो सही वाली होगी वो बच जाएगी. Let's have a look at option A for example. हमें ये कहा गया था the sum of the two digits is 7. So okay, A का sum is 5 and 2 7. Okay, option A stays. B का sum is 8. B तो वैसे ही eliminate हो जाएगा. C का sum is 7. Okay, D का sum is 6. ये भी eliminate हो जाएगा. E का sum is 7. This will also stay. So जिसका sum 7 नहीं है उन options को तो वैसे ही eliminate कर दें. So option B एंड ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट होगी. ठीक है, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ए, सी एंड ई. अब अगली कंडीशन क्या थी? अगली कंडीशन ये थी कि इफ यू रिवर्स द नंबर, सो फॉर एग्जांपल 52 है, इसको अगर आप रिवर्स कर दें और इसमें 3 ऐड करें, सो 52 को अगर मैं रिवर्स करता हूं इट बिकम्स 25. अब अगर मैं 25 में 3 ऐड करूं, दिस बिकम्स 28. इज इट 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर? Is 28 4 times 52? No, it's not, बल्कि उससे बहुत कम है. So A भी eliminate हो गया. Now we're left with only C and E. So C को चेक कर लेते हैं. C का sum was 7, पहली condition is satisfied. If I reverse the number, it becomes 16. Okay, so far so good. 16 के अंदर if I add 3 to it, it becomes 19. Now is 19 4 times the original number? Is 19 4 times 61? No, it's not. It's actually much less than that. 19 is much less than 61. So option C भी eliminate होगी. अब मुझे पता तो चल गया है कि आंसर E है, but still चले, let's say हमारे पास बहुत टाइम है और हम फिर भी चेक करना चाहते हैं. Let's check. नंबर है 16. पहली कंडीशन was the sum of the digits has to be 7. 1 plus 6 is 7. Good, पहला टिक लग गया. If the digits are reversed, so 16 को रिवर्स किया, 61 बन गया. Okay, and if I add a 3 to it, it becomes 61 plus 3 64 हो गया. So is 64 4 times the original number? The original number was 16. So yes, 4 times 16 is 64. Therefore, I can now confidently say that my correct answer would be E, option E, 16. So what I want you to understand from this example is that there are smarter ways of solving a rather difficult problem, especially in standardized testing, जहां पे आपके पास MCQs में से कुछ ना कुछ चूज करना होता है. आंसर आपके सामने ही होता है, just eliminate the wrong ones and you will be left with the right one automatically. So work backwards. It helps in a lot of cases. ये इसका फायदा होता है. So think about solving some questions based on this logic and काफी आसानी हो जाएगी hopefully. Let's have a look at the next question. Okay, so this is coming from the topic of statistics. अगर मैं टॉपिक का नाम बताऊं, आधे लोग तो वैसे ही होप लूज कर देंगे कि this is one of the most difficult topics that we have ever heard of. या हमने तो इसको सुना ही नहीं है, हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करें? This is coming from
परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, उसका सवाल है। ठीक है, सो आई एम श्योर अगर हमारे साथ इस वक्त 50-60 पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनमें से शायद 30-40 ने देखा भी नहीं होगा। ठीक है, how many different three digit numbers can be formed from 0, 3 and 5 if none of them is repeated in a number? सही है। So again, let's not make it complicated. Let's stick to the basics. Let's try and keep it simple. मुझे सिंपल ये कंडीशन पता है कि आई हैव टू मेक अ 3 digit नंबर, अ 3 digit नंबर इन विच डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, और 3 ही मेरे पास नंबर है। सो आई कैन लाइक लिटरली काउंट ऑन माय फिंगर्स कि कितने नंबर्स होने चाहिए। आई नो कि 0 से तो नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट बी अ 3 digit नंबर। 035 इज नॉट अ 3 digit नंबर, उसकी वैल्यू 35 है, सो इट्स अ 2 digit नंबर बेसिकली। सो 3 digit नंबर या तो 3 से शुरू हो सकता है या 5 से हो सकता है। सो पहला 3 digit नंबर क्या हो सकता है? 305। दूसरा क्या हो सकता है? 350। ओके, सो 3 से स्टार्ट करके मैं 2 बना सकता हूं, मैंने साइड पे कर दिया। द नेक्स्ट नंबर दैट आई कैन स्टार्ट ऑफ विद इज 5। सो उससे भी 2 बन सकते हैं, 503 और 530। आई नो ऑटोमेटिकली बाय नाउ दैट देयर आर ओनली 4 ऑप्शंस। इसको अगर मैं चाहूं तो आई कैन ऑल्सो डू इट विद अ लॉट ऑफ बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल की जो टर्मिनोलॉजी है, टेक्निक है, उसके साथ भी कर सकता हूँ। बट व्हाई डू दैट? व्हाई मेक इट कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट्स नॉट? व्हाई फिक्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट फिक्स समथिंग व्हेन इट्स नॉट ब्रोकन? क्यों उसको इतना मुश्किल बनाए हम? लेट्स कीप इट सिंपल। आप इसको अगर आप आंसर चॉइसेस ही देखें, क्या है? 2, 3, 4, 5। So you should automatically, this should trigger a thought in your mind that I should be able to solve it without the use of a pen and paper, maybe even on my fingers I can count the number of possible options and you will get to it. So somebody is saying that 035 is also an option. So like I said, मैं चार्ट पे से साथ साथ जितनी मेरी उस पे जा रही है नजर, I'm just skimming through those. Somebody is saying that 035 is also an option. I'll tell you why this is incorrect. एक तो ये कि जो लोग 6 आंसर दे रहे हैं, the first thing that you need to notice is that 6 is not even an option. So that means that's a signal that you're doing something wrong. Um, then why is 035 or 053 not an option? ठीक है, it's not an option because like I said, if you have to make a 3 digit number, it cannot start from 0. If you have to make a 2 digit number even, तो और आपके पास 0 और 3 है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो it cannot be 03, it has to be 30. A 3 digit number, अगर if you starting it from 0 तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, so it will just be discarded। और 035 आप कह रहे हैं तो it is just basically 35, which is a 2 digit number. For those who are saying 303, if you read the question statement, towards the end it says if none of them is to be repeated. So हम 303 के अंदर आप 3 को 2 दफा यूज कर रहे हैं, it cannot be repeated. Therefore 303 or 505, these are not possible options either. ठीक है, so like I said, the only 4 options that we have are 305, 350, दो ये हो गई, and then 2 more options starting with 5, 503 and 530. ठीक है, चलें, great, let's move on. Geometry, fear of most of us. But I was talking to somebody here at LUMS the other day and he was saying कि मुझे मैथ के अंदर जिंदगी में कुछ नहीं समझ आया except for geometry. So then there is that category of people जिनकी geometry बाकी सारी areas से ज़्यादा strong भी होती है. But I think most people that I've come across, उनको geometry से ज़्यादा problem होती है and arithmetic और algebra वाली चीज़ें फिर भी बेहतर solve कर लेते हैं. So regardless whether you're good or bad at geometry, uh, be assured that the questions that you will see on the standardized testing from the topic of geometry cannot be very complex. One, because in most tests you're not allowed a calculator, so आपको बहुत मुश्किल calculations तो देंगे ही नहीं. Second, they don't want you to cram or rote learn a lot of lengthy formulas related to geometry. Basic तो of course पता होने चाहिए कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बट कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, इस तरह की नॉलेज दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव। अगर कोई जरूरत होगी तो दिस फार्मूला विल बी गिवन टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट और विद इन द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो इस एग्जांपल को देखते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट।
It's, by the way, very good and encouraging to see from this side of the camera that you all are answering questions quite quickly and making an effort to get to the correct answer. So this is, to be honest, quite encouraging to see. Continue doing that and I'll help you get to the correct answer. Chale. A rectangle is 14 centimeter long and 10 centimeter wide. Okay, so simple words में हमारे पास एक rectangle है जिसकी width जो है वो 10 सेंटीमीटर है and length जो है वो 14 सेंटीमीटर है. Okay, if the length is reduced by x centimeter and its width is increased by x centimeter so as to make it a square. Okay, so हम करना क्या चाह रहे हैं? We want to convert a rectangle to a square. रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता है दैट ऑल साइड्स हैव टू बी इक्वल. सो जो लेंथ है वो फिलहाल 14 है. वी हैव टू रिड्यूस इट बाय अ सर्टेन नंबर एंड जो आपके पास विड्थ है दैट इज 10. वी हैव टू इंक्रीज इट बाय अ सर्टेन नंबर सो दैट इट बिकम्स अ स्क्वायर. सो वो सर्टेन नंबर क्या हो सकता है? 14 और 10 के बीच में क्या होता है? 12 होता है. ठीक है, सो लेंथ को हम 2 सेंटीमीटर कम कर रहे हैं और विड्थ को हम 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहे हैं. ओके, अब हमें हमसे पूछा क्या हुआ है? यहाँ तक तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है, लेंथ को 2 कम कर रहा हूँ, विड्थ को 2 इंक्रीज कर रहा हूँ. व्हाट इज द चेंज इन एरिया? ये सवाल है, एरिया कैसे चेंज होगा? ओके, सो अभी एरिया क्या है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अभी एरिया ये है, एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू विड्थ. ये तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, अगर भूल गया तो नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट इट डाउन. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय लेंथ इनटू विड्थ. सो 14 टाइम्स 10 क्या होता है? 140. सो आपका एरिया रेक्टेंगल का 140 है. अब स्क्वायर जब आपने बना लिया है तो हमने अभी एस्टैब्लिश किया था द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज बिकमिंग 12. सो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 12 इंटू 12. लेंथ एंड विड्थ इज द सेम, 144. सो 144 अगर स्क्वायर का एरिया है एंड 140 रेक्टेंगल का एरिया है तो उन्होंने आपसे डिफरेंस पूछा है. डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ जस्ट गिविंग द आंसर 144. इट हैपेंस अ लॉट इन मैथ एंड आई एम श्योर मावरा इट हैपेंस इन इंग्लिश समटाइम्स एज वेल कि हम Yes. लोग वी गेट कैरिड अवे during yeah, in the middle of a question and we get excited कि oh मुझे समझ आ गया, I got to the right answer, and we just mark it quickly without actually rereading the last statement कि हमसे पूछा क्या हुआ है. So उन्होंने हमसे difference of the area पूछा हुआ था. The difference between 144 and 140 is 4. So this is the correct answer. 4 centimeter square कह लें या सिर्फ 4 लिखा हुआ है तो that is also fine. This is how you get to it. And I can already see people cheering in the chat that they got the correct answer. Very good. Okay, so let's see if you get this one correct as well. This is I feel like we're in a quiz competition. हम सवाल करा रहे हैं and they're answering, but very good. इसी चक्कर में आप लोगों की अच्छी तैयारी भी हो जाएगी and we'd be very glad. चलें, let's have a look at this question. A cistern has 2 taps which can fill it separately. My favorite work problems, which can fill it separately in 9 and 12 minutes respectively. It has a waste pipe which can empty the full cistern in 6 minutes. If all the 3 taps are open together, then the empty cistern will be filled in. So by now, I mean, even in the 3 days or the 2.5 days that we've spent together now, आप लोग अच्छी तरह से एग्जामिनर की साइकोलॉजी मेंटालिटी समझ चुके होंगे. उसका एक इमेज भी बना सकते हैं आप अपने माइंड में कि कोई कनिंग सा बंदा है जो कि आसान सवाल को बहुत मुश्किल बना के दे देता है और मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करना चाहता है जबकि नहीं होती. हमने जब वर्क प्रॉब्लम्स पढ़ा था, आई क्लियरली सेड कि फॉर्मूला एक ही रहना है. ठीक है, हमने प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस वाला फॉर्मूला देखा था, राइट? हमने कहा था फॉर्मूला एक ही रहना है. अब आगे वो चाहे आपको सबमर्ज्ड एरिया दे दे या किसी डेजर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दे या बहुत मुश्किल वोकैबुलरी डाल के क्वेश्चन स्टेटमेंट दे दे, बॉटम लाइन रिमेन्स द सेम. अगर 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं, 2 पाइप्स एक ही काम कर रही हैं तो प्रोडक्ट ओवर सम. अगर वो अपोजिंग काम कर रही हैं तो प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस. इस केस में मुझे पता है 3 पाइप्स हैं. आई विल डिसरिगार्ड ऑल अदर इंफॉर्मेशन कि सिस्टर्न है तो किस कलर का है तो कितना बड़ा है. आई विल डिसरिगार्ड ऑल दैट इंफॉर्मेशन एंड आई विल जस्ट look at the numbers. I know that there are 2 taps which are trying to fill the tank. ठीक है, 9 and 12 minutes उनका टाइम है तो वो दोनों मिलके कितनी देर लगाते हैं? प्रोडक्ट ओवर सम. सो 9 times 12 divided by 12 plus 9. यहां से मेरे पास एक आंसर आ गया. And but now I know that then there is something which is opposing it. वो इनफ्लो के रेट थे, ये आउटफ्लो के रेट हैं. So
जो मेरे पास 9 और 12 को वर्क करके एक आंसर आया है, मैं उस आंसर को यूज करूंगा और दोबारा से फॉर्मूला लगाऊंगा, बट दिस टाइम आई विल अप्लाई प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस। ठीक है, सो प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस लगाऊंगा विद 6 और मेरे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा थ्रू ऑल दैट वर्किंग, दैट विल बी 36। सो इफ यू राइट इट डाउन, इफ यू वर्क विद फ्रैक्शंस, यू डोंट इवन नीड अ कैलकुलेटर एंड यू कैन गेट टू द राइट आंसर। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। दो तरीके हैं। मुहावरा पहले तरीका आसान वाला बताऊं या मुश्किल वाला? आई थिंक मुश्किल दोनों वाला बताना पहले, चाहता फिर हूँ। आसान अच्छा, वाला एंड आसान वाले पे करना। अच्छा, चलो। मुश्किल वाला तरीका, लेकिन जो ज्यादा इंट्यूटिव होता है फॉर मोस्ट पीपल, वो ये है कि आप एक इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन जिस तरह से हमने सीखी थी, 1 ओवर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी, वो वाली सारी चीज करना है। ठीक है, सो इस केस के अंदर 1 ओवर रिक्वायर्ड टाइम, 1 ओवर एक्स कह लें उसको, विल बी इक्वल टू, ऐड उनको करना है जो दोनों इनफ्लो पे हैं। सो 1 ओवर 9 प्लस 1 ओवर 12, ये दोनों इनफ्लो वाले हैं, और सब्ट्रैक्ट उसको करना है जो कि आउटफ्लो है। सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 1 ओवर 6। सो 1 ओवर 9 प्लस 1 ओवर 12 माइनस 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। इस तरह कर लें, थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी, बट एक्स को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट टू द करेक्ट आंसर। The other way that I explained at the start, वो ये है कि product over sum use कर लें पहले 9 and 12 के साथ, because they are essentially trying to do the same work। वो दोनों inflow के rates को signify कर रहे हैं, वहां से एक आंसर आ जाएगा। So 9 और 12 का जब आप product लेंगे और उसको divide करेंगे by its sum, you will get to one answer, right? So फिर आप उस आंसर को यूज करें together with 6 और इनका प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस ले लें। वाई प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस? बिकॉज नाउ दे आर अपोजिंग ईच अदर, ये आउटफ्लो है और ये इनफ्लो है। सो दिस इज हाउ यू कैन get to the answer, which is 36. Okay, time to move on to some logical reasoning. And this looks like a very long statement. So, Mavra, why don't you walk them through this one? Yes, sure. Thank you. So, logical reasoning, as we already discussed in the beginning, that this particular section is neither math nor English. It's a mix of both, you could say. It's actually your understanding of how you, look at assumptions, how you develop an understanding of the statements given within the question. So, let's read it together and let's try to find out the best possible answer. So, this question says, traditionally, decision making by managers that is reasoned step by step has been considered preferable to intuitive decision making. However, a recent study found that top managers use intuition significantly more than did most middle or lower level managers. This confirms the alternative view that intuition is actually more effective than careful methodical reasoning. The conclusion above is based on which of the following assumptions? First, let's read the conclusion that they have made again. This confirms the alternative view that intuition is actually more effective than careful methodical reasoning. So, how did they get this conclusion? The sentence, the entire sentence, it is the view that has been given, and we have to decide what is how did they come up with this conclusion with the help of the assumptions given below. And out of these 5 assumptions, obviously one of them is the right answer. So let's read out the first option. Methodical step-by-step reasoning is inappropriate for making many real-life management decisions. B, top managers have the ability to use either unintuitive reasoning or methodical step-by-step reasoning in making decisions. Then C, the decisions made by middle and lower level managers can be made as easily by using methodical reasoning as by using intuitive reasoning. And then D, top managers use intuitive reasoning in making the majority of their decisions. E, top managers are more effective at decision making than middle or lower level managers. If you read the statement of the question, which is very detailed, you will realize that first of all, they prefer the top level managers, they prefer intuitive decision making over methodical reasoning, right? And the top managers, with comparison to the lower level or middle level managers, they believe in making decisions based on intuitive reasoning, right? So this is something that we have concluded by reading the statements. And one more thing that we read out in the beginning was that
the reasoned step-by-step decision making, it's considered preferable to intuitive decision making. However, now here they are contradicting. A recent study found that top managers used intuition significantly more than did most middle or lower level managers. So the top managers, how did they get there? Because of intuitive decision making. So it shows the reason behind their success, and that is why option A would not make sense, because it says methodical step-by-step reasoning is inappropriate. We did not read that information anywhere in the question. Then B, top managers have the ability to use either unintuitive reasoning or methodical step-by-step reasoning in making decisions. Yes, they do have the ability, but this is not what the assumption is, the view is based on. C, the decisions made by middle and lower level managers can be made as easily by using methodical reasoning as by using intuitive reasoning. Once again, this was not mentioned earlier in the question that we read, and this is not what we are looking for based on the view that we have just read. Then D, top managers use intuitive reasoning in making the majority of their decisions. Sounds about right, but the thing is that if we read the view, intuition is actually more effective than careful methodical reasoning, then this does not go as an answer. Then E, top managers are more effective at decision making than middle or lower level managers. Now this makes sense, and if you would like to find out what's the right answer, it's going to be option E, because we are talking about the effectiveness of intuition over step-by-step reasoning. In that case, top managers prefer to make decisions based on intuition, and that is a more effective way as compared to the technique used by the middle or lower level managers, which is methodical reasoning. So for that, we will go for option E. So yes. Okay, so I can probably do this one with you guys. Logical reasoning jo thi, we said there are two subcategories in logical reasoning. This is the first of the two categories, jiske andar you have lengthy statements and you have to get to a certain answer based on the information provided in the question. Iske baad dusri jo type hai, we will also discuss that, but first let's have a look at this one together. The recent decline in the value अच्छा so इसके लिए बहुत focused learning required है. So जैसे मैं read करूँ, try and understand and grasp the information साथ साथ. The recent decline in the value of dollar was triggered by a prediction of slower economic growth. ठीक है, so अगर मैं इसको अपने mind में rephrase करूँ तो मैं कहूँगा dollar की value में decline इसलिए आ रहा था because prediction थी कि economic growth कम हो जाएगी. Okay. But that prediction would not have adversely affected the dollar had it not been for the government's huge budget deficit, which must therefore be decreased to prevent future currency declines. Okay, वो कह रहे हैं कि prediction थी slower economic growth की, लेकिन वो इतना ना affect करती अगर government का बहुत ज़्यादा budget deficit ना होता. Okay, इसलिए ज़रूरी है that we prevent such situations in the future. Which of the following, if true, would most seriously weaken the conclusion? ठीक है, so हम अब उस आंसर पे जाना चाह रहे हैं which is contradicting or weakening the argument given in the question. ठीक है, in the statement. Argument given क्या था? Again, argument ये था कि डॉलर की वैल्यू में डिक्लाइन आया है because of a prediction of slower economic growth. और इतना ज्यादा इफेक्ट ना आता अगर गवर्नमेंट का ह्यूज बजट डेफिसिट ना होता. So we need to find something which is weakening this argument. The government has made little attempt to reduce the budget deficit. No, doesn't make sense. ये तो बिल्कुल ही एक कह लें unrelated सी बात है. गवर्नमेंट ने कितना एफर्ट किया या नहीं किया, that is not strengthening or weakening the argument. The budget deficit has not caused a slowdown in economic growth. Okay, let's keep it for now. थोड़ी बहुत सुनने में सही लग रही है. The value of the dollar declined several times in the year prior to the recent prediction of slower economic growth. अच्छा, okay. वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ डॉलर पहले भी डिक्लाइन हुई है बहुत दफा इस प्रिडिक्शन, जब ये प्रिडिक्शन नहीं होती थी. सो दिस प्रिडिक्शन ऑफ स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ केम दिस टाइम अराउंड, बट डॉलर की वैल्यू तो पहले भी कम होती रही है. This sounds like something which is contradicting or weakening the argument. So argument तो ये कह रहा था कि value इसलिए कम हुई है because एक prediction आई है economic growth slow होगी. But then there is somebody replying that
जब ये प्रेडिक्शन नहीं होती थी डॉलर तो तब भी कम होता जा रहा था उसकी वैल्यू. सो डू आई नीड टू, चले आगे रीड कर लेते हैं. बिफोर देयर वाज अ लार्ज बजट डेफिसिट, predictions of slower economic growth frequently caused declines in the dollar's value. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि बजट डेफिसिट जब नहीं भी होता था तो देयर वाज अ लार्ज डिक्लाइन इन डॉलर्स वैल्यू पहले से भी. एंड ऑप्शन ई कह रही है when there is a large budget deficit, जब बहुत ज्यादा बजट डेफिसिट हो जाता है, other events in addition to predictions of slower economic growth sometimes trigger decline. This is totally unrelated and ये तो उसके आउटकम की बात कर रहा है, नॉट समथिंग विच इज डीलिंग विद द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ. सो आर्ग्यूमेंट का क्रक्स क्या था? आर्ग्यूमेंट का क्रक्स ये था, वैल्यू ऑफ द डॉलर is being adversely affected because of some sort of economic prediction. ठीक है, some sort of prediction related to economic growth. ऑप्शन सी कहता है कि ये प्रिडिक्शन नहीं थी तब भी डॉलर वीकन होता था. दिस इज द वन दैट इज ओनली कॉन्ट्रडिक्टिंग द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन. सो द करेक्ट आंसर इज सी. This requires focused learning. What helps me personally in attempting such problems is to always rephrase the question statement in my head and in most times, to be honest, in Urdu, because जब मैं question statement पढ़ रहा होता हूँ, I kind of get lost in a lot of sentences, a lot of vocabulary, a lot of content in the statement. So मैं उसको सिंपल सा अपने दिमाग में कहता हूँ कि अच्छा डॉलर कम हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, फुल स्टॉप, बाकी सब भूल जाओ एंड लेट्स मूव ऑन. सो इट ऑलवेज हेल्प्स टू रीफ्रेज एंड दिस certainly improves a lot with practice. Acha. So this is the other type of logical reasoning question that I wanted to run with you guys today. Let's read it together. So situation कुछ ऐसी है एंड अक्सर इसी तरह के सवाल आते हैं. सो वो कहता है कि अभी हम एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया, बल्कि आई गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड सो दैट you guys don't try and read it before me. So इस तरह की सिचुएशन आती है. सो फॉर एग्जांपल देयर आर टू पीपल, हारून एंड मावरा. उनकी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई है एंड इफ दे आर स्टैंडिंग इन अ क्यू दे विल नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर. Then what will be the correct arrangement of standing in a queue if there are in total 10 people? सही है. So इस तरह की conditions देंगे. There are twins in a certain class and the teacher needs to give assignments to students such that twins को अलग अलग मिले. किस तरह से वो हो सकती है, उसका क्या order हो सकता है. So इस तरह की basic problems जो होती हैं, और I always suggest to solve such problems on a piece of paper using a pen. आप उसको dashes लगा के काफी अच्छी तरह से solve कर सकते हैं. But this one that I want to do with you guys is slightly difficult, but again, let's see how we can do it more effectively. F must sit in the chair immediately behind O's chair. So let's say कि ये जो alphabets and they're representing different people, and the first logical condition is that F must sit in the chair immediately behind O's chair. G cannot sit in the chair immediately in front of N chair and G cannot sit in the chair immediately behind N's chair. So G N के आगे भी नहीं बैठ सकता और एक पीछे भी नहीं बैठ सकता. There must be exactly two chairs between H and P. H and P के दरमियान में exactly two chairs होनी चाहिए. There must be at least one chair between I and P. N must sit in chair 3. Which of the following conforms to the rules? अब अगर इसको आप वैसे बनाने की कोशिश करेंगे, it will take you a lot of time, and there can be more than one possibilities. ठीक है, there can be more than one possibilities as well, and if you try and think of the sequence without looking at the answer choices, it can be problematic. So मैं एक एक condition को देखूंगा, और again, like I did earlier, I know that I have the answer choices in front of me. I will just eliminate the wrong ones. पहली कंडीशन क्या है? F must sit in the chair immediately behind O's chair. So ऑप्शन ए में F O के पीछे बैठा हुआ है बिल्कुल? No. ऑप्शन ए eliminated. Simple. ऑप्शन B stays because F is sitting immediately behind O's chair. ठीक है. So B stays, C stays, and D also stays because A cannot be the correct answer because F and O काफी गैप के साथ हैं, और पहली कंडीशन ही थी कि F must sit in the chair immediately behind O's chair. So I eliminated A and I am now left with B, C and D. अगली कंडीशन क्या है? G cannot sit in the chair immediately in front of N and G cannot sit in the chair immediately behind N. So G ने N के साथ नहीं बैठना.
कोई ऐसी सिचुएशन है बी, सी या डी में से, हमारी शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस में से, वेयर जी इज सिटिंग नेक्स्ट टू एन? बी में तो चलें दूर बैठा हुआ है, इट्स सेटिस्फाइड. जी में बिल्कुल साथ बैठा हुआ है. सो आई है, जी है और एन है. सो दिस कैन ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट्स वायलेटिंग द सेकंड कंडीशन रिलेटेड टू जी. सो डी में जी और एन साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, नहीं बैठे हुए, सो दिस कैन स्टे. सो नाउ आई एम लेफ्ट विद बी एंड डी. अब अगली कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 2 चेयर्स बिटवीन एच एंड पी. और अब मैंने सिर्फ बी और डी को चेक करना है. सो बी के अंदर एच और पी के बीच में सिर्फ 2 चेयर्स हैं, इफ यू नोटिस, एन एंड आई. डी के अंदर अगर आप नोटिस करें तो एच एंड पी के बीच में सिर्फ एक चेयर है. सो डी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी फॉर बीटा. एंड this is how you can solve an apparently difficult problem uh, rather simply and in a short amount of time, because you know that you have the answer choices in front of you. You can work backwards and this helps a lot in the graduate assessment test. So the correct answer is B. Okay, so now it's time for you to ask us questions and for us to answer your questions. And I've been receiving a lot of questions on the chat, and I just have a list here populated in front of me. Mavra, maybe you can handle the questions related to the verbal section, and I can answer anything that's related to the logical or quant section. Sure. Okay, how many times can I take the GAT in a year? So usually in a year, how many times can I take the GAT? So usually there are 3 attempts allowed. कोई उसके बीच में specific क्या कहते हैं interval is not compulsory. But what you need to check is कि GAT कब कब conduct हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है. So usually GAT is conducted 5 times or 6 times in a year. COVID की वजह से, situation की वजह से it has been varying, but the general trend is 5 to 6 times in a year. It is conducted in all major cities of Pakistan. आप NTS की जो official website है वहाँ पे जाके you can see कि अगला GAT कब होना है. I think it's scheduled for March now. एक अभी recently a few days ago GAT गुजरा भी है. And yeah, I hope this answers your question. So the next one is, what are the resources to prepare for the GAT? That's a good question. So like I said in the very start, GAT is most commonly known as the local GRE. So if you have resources available with you to prepare for the GRE, then as far as content or the syllabus is concerned, those resources should suffice. Okay? However, I understand and I fully agree with those who want to attempt GAT based on the actual pattern of the test. So उसके लिए there are a lot of online resources available. NTS की अपनी website पे भी आपको उसका सारा structure मिल जाता है. But what I find useful usually is a website called gregmat.com. उसके अंदर GAT का भी काफ़ी सारा content available है. आप वहाँ से देख सकते हैं. majortest.com, that is also a website which has a lot of material related to the graduate assessment test. So if you're starting off with your preparation, the first thing to do, depending on how much time you have, given that you have at least a month, the first thing to do would be to prepare for individual topics. I'm talking of maths right now. So आप arithmetic को prepare करें, आप algebra को prepare करें, आप geometry को prepare करें, and आप data processing को थोड़ा सारा prepare करें. Spend about 10-12 days to prepare. उसके बाद prepare the topics, topic wise. उसके बाद spend the last 2 weeks, अगर हम एक month का study plan बना रहे हैं, spend the last 2 weeks doing full length past papers based on the actual pattern. So GAT तो वैसी paper based होता है, so take a printout and attempt a full length 2-hour test and then score yourself and see where do you stand. English के लिए मावरा, what would you recommend कि किस तरह से topic by topic चलना चाहिए है या? I would suggest that because yes, we have categories. We have vocabulary, and then there are subcategories to vocabulary. Then we have comprehension, and we have so for these categories, I would really suggest that you make good use of the separate sections. Of course, first of all, you should focus on comprehension, and then you should focus on vocabulary also. जिसकी weighted ज़्यादा है, of course, उसको ज़्यादा time दो, उसकी practice ज़्यादा अच्छे से करो. So I think that's the best way to go about it, section wise. Okay.
ग्रेट. सो यस, मैथ एंड इंग्लिश दोनों की अगर हम बात करें तो इट्स द सेम methodology that you can follow to prepare. The next question that I saw was very interesting. There's somebody who is saying, I've been preparing for GRE for 4 months, but after attending this session, I think it's a good decision to move on to prepare for the GAT because I want to apply to the LUMS MBA program. Uh, my first question back to you would be, if you've spent 4 months trying to prepare for a certain type of test, और अब जब टेस्ट देने का टाइम आ रहा है, why would you want to switch? Uh, of course the decision is yours, but अगर आपने इतनी मेहनत की है, 4 months is a lot of time to prepare for a standardized test, और आपने I'm sure इसके अंदर syllabus भी cover किया है, आपने pattern भी अच्छी तरह से देखा है. So I think better try and book a date for the GRE and go for GRE. उसका reason क्या है? उसका reason ये है कि by now you would have developed an intuition for the types of questions that you see on the GRE. आप डेटा कंपैरिजन, आई मीन assuming that you've spent 4 months properly studying, आप अब क्वांट कंपैरिजन वाले सेक्शंस से बड़ी अच्छी तरह फेमिलियर हो चुके होंगे आप. अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो उसके अंदर जो टेक्स्ट कंप्लीशन आती है उससे काफी अच्छी तरह फेमिलियर हो, एक इंट्यूशन बन चुकी होगी. सो व्हाई unlearn that and learn something new when you just a few days or a few weeks before the deadline? So I'd recommend that you stick to GRE. अच्छा जी. So next question ये है, how much time should I take to prepare for the test? What do you suggest? Excuse me. You could take, it depends of course on your study schedule and how do you plan on doing it. Like we have already suggested that we should go section wise for both math and English. So in that case I would suggest that there is no time frame. I mean it's up to you, it's up to your level of interest and understanding, but at the same time I would say that at least give each section I would say 5 to 6 days maybe, and divide your time accordingly, and maybe a month or more. So I think that time frame would be enough for you to have a good understanding of each and every section of math and science, quant as well as English. So I think that's how you could allocate your time for each and every section depending on their weightage. For some sections you might need more than 5 to 6 days, for some of them you might need a week or so. So it totally depends on how much time you're giving to each section and on the weight according to the weightage. So yes. सही है. So अगर मैं ये क्वेश्चन को आंसर करना चाहूँ, आई वुड से दैट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग शुड नॉट टेक यू मोर देन 6 वीक्स. व्हाई? बिकॉज 6 वीक्स के अंदर आप जितना प्रिपेयर कर लेते हैं, सो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के अंदर यस, थ्रू ऑल दी सेशंस, थ्रू ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन, आप अपने आप को यहाँ से यहाँ पे ला सकते हैं पहले 6 हफ्तों में. बट उन 6 हफ्तों के बाद आप जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा. वाई? बिकॉज स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को क्रैक करने के लिए जो शॉर्टकट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो स्टैमिना रिक्वायर्ड होता है, जो टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो अगर आप एडिक्वेट टाइम दें तो 6 वीक्स के अंदर यू कैन बी अप टू पार नो मैटर वेयर यू स्टार्टिंग फ्रॉम. आप बिल्कुल स्क्रैच से भी शुरू कर रहे हैं, 6 हफ्ते इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम to prepare for any standardized testing, whether it's the GMAT, whether it's the GRE, whether it's the GAT. Now, some might disagree, some might say कि मुझे 2-3 महीने चाहिए. I mean, fine with me. Of course, अगर आपको वो you have that amount of time available, go for it. But I mean, the kind of person I am, and if you were to take my advice, I would rather spend 6 weeks preparing properly and get it off my mind. So उसी चीज को 4 महीने जब आप एक्सटेंड करेंगे तो हो सकता है आप अपने दिमाग के अंदर वो प्रेशर बिल्डअप ज्यादा कर लें. सो जितनी इंप्रूवमेंट आनी होती है 4 to 6 weeks में आ जाती है, गिवन दैट यू स्पेंड अबाउट what 6 to 8 hours in a week. अच्छा खासा मेरे हिसाब से 6 to 8 hours with focused learning is a good amount of time preparing for. Don't consider these tests as something that stops you or something that is a hurdle. इनको बस एक रिक्वायरमेंट समझे, और इस तरह की भी रिक्वायरमेंट ना समझे कि यार अब मैंने अप्लाई करना है, मुझे ये टेस्ट देना पड़ गया है, आई डोंट वांट टू टेक द टेस्ट, मुझे इसका क्या फायदा, आई हैव बीन आउट ऑफ स्टडीज. थिंक ऑफ इट एज समथिंग व्हिच विल एक्चुअली हेल्प you. How will it help you? Because you are ultimately planning to get into a graduate program, right? In a matter of a few months you will be in a graduate school, और आपको
एक हेक्टिक रूटीन होगी, डेटा प्रोसेसिंग डे इन डे आउट होगी, सो लंबे लंबे आपको अपने, हम लोग उसे वैक कहते होते थे, राइटिंग असाइनमेंट्स जो होती हैं, राइटिंग असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी, सो वो सारा कुछ आपने करना है। तो नाउ इज अ गुड टाइम कि आप स्लोली अपनी वो स्किल्स जिनसे बिल्कुल आउट ऑफ टच थे उनको बिल्ड कर लें, एक अच्छे लेवल तक बिल्ड कर लें। स्कोर तो आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, अच्छा स्कोर आ जाएगा, एंड देन यूज द नॉलेज दैट यू लर्न इन द ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्टिंग वर्कशॉप से जो आप सीख रहे हैं और जो आप प्रिपेयर करते हुए टेस्ट के लिए चीजें सीखेंगे, यूज दैट नॉलेज एंड अप्लाई इट ऑन द प्रोग्राम दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। सो जब मैंने जीमैट दिया था, I was always very excited because मुझे होता था कि अच्छा, I'm solving integrated reasoning. This is the kind of problems that real companies face. This is the kind of stuff that I will be discussing in my MBA class at LUMS. Case study जब करेंगे तो उसके अंदर मुझे इस तरह का data दिया जाएगा, and then I have to raise my hand and participate in the class and say that excuse me sir, I derived this piece of information or this insight from the data. So मैं तो उसको बड़ा positively लेता था, and that is something that I think helped me breeze through the testing phase and the preparation phase. 2 3 4 हफ्ते से ज्यादा मुझे लगे ही नहीं थे, एंड मुझे वो भी नहीं फील हुआ, आई वाज मोर एक्साइटेड कि यार चलो टाइम होता थोड़ा और पढ़ लेता, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी इवेंचुअली. सो think of a standardized testing like that. Don't consider it a hurdle in applying to admissions. So coming back to your next question, and let's make it the last question because we're running out of time. This is related to, okay, this is the question that I've already answered. Resources wala ho chuka hai. How do I prepare? This is also, I think we've taken most of the questions. Okay, so this one is probably related to GRE, but I'd still address it. Is GRE testing at home available in Pakistan? The recent update is for Pakistan, it's not available now. But these things, I mean, जो जिस तरह की सिचुएशन है यार, आई मीन वेयर इन अ पेंडेमिक, आज लॉकडाउन होता है, कल नहीं होता, आज स्कूल्स खुल जाते हैं, कल बंद हो जाते हैं, वी आर आल्सो अडैप्टिंग. सो इट्स हार्ड टू गिव यू अ शॉर्ट आंसर ऑफ व्हाट विल हैपन व्हेन यू वांट टू टेक द जीआरई. ठीक है, उस वक्त टेस्टिंग एट होम अवेलेबल होती है या नहीं होती. सो व्हाट आई कैन रिकमेंड इज जस्ट keep yourself updated with these official testing websites. So for GMAT आप mba.com के ऊपर information होती है, उसको पढ़ते रहें. GRE के अंदर ets.org उसके ऊपर information होती है. So you can select your country पाकिस्तान, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि टेस्टिंग एट होम अवेलेबल है या नहीं है. अगर मैं आज की बात करूँ, आज अवेलेबल नहीं है, कल को हो सकता है अवेलेबल हो, परसों हो सकता है अवेलेबल थी. सो इट कैन keep changing, but keep yourself updated through the official website. Don't rely on me, don't rely on Mavra, don't rely on anybody else. The best resource is the official website, right? So आप एक ब्राउज करें, वेबसाइट पे जाएं, देखें, वहां पे क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी. सी इट विद योर ओन आईज सो दैट कल को कि आपके पास बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो और वो इधर उधर से घूम के ना आए. सो GRE टेस्टिंग एट होम की इन्फॉर्मेशन यू कैन हैव अ लुक एट ets.org, और वहां पे टेस्टिंग एट होम इन पाकिस्तान का अलहदा से आपको पेज भी मिल जाएगा. So I think that's it related to NTS GAT. I hope me and Mavra, we were able to give you a good overview of what the test is, why do you need it, whether it's easier or more difficult than GRE. हमने directly तो नहीं बताया, but I think in between the lines you were getting an idea of where we're getting to. Whether it's more acceptable than the rest of the tests, that is something which nobody knows. But if a university is accepting it, then you can go for it without any क्या कहते हैं hesitation, and take a diagnostic test for each of the 3 tests, GRE, GMAT and GAT. अगर आप तीनों में confused हैं अभी तक, and see which one suits you better. आपका personal जो strengths and weaknesses हैं उसके हिसाब से where do you adjust better. So this is I mean these are the words of advice that I can offer to you, and that's it from my side. Mavra, if you want to say anything, and then we can close the session. Yes, I would just say that make sure that you decide wisely, just like Haroon said, that practice diagnostic tests so that you could have an idea about each one of the tests and you could decide accordingly. Because all of us, we know our strengths and weaknesses and we can judge ourselves the best. So yes. True. And just one announcement, we now have a lunch break. After that, we have an alumni session. So I announced it yesterday as well. Alumni हमारे पास
बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम से आ रहे हैं आज, ठीक है. सो वी विल हैव समबडी फ्रॉम MBA, वी विल हैव समबडी फ्रॉम लेट्स से एग्जीक्यूटिव MBA, PhD, आई डोंट नो, MS बायोलॉजी, और ये सारे भी हमारे पास एक पूरा पैनल होगा. यू कैन आस्क देम योर क्वेश्चंस, you can they will give you an introduction of the program. Shayad, I hope I was candid enough during these 3 days, but they will be more candid than me and Mavra, and you can ask them anything you want and they will help you understand the requirements of the program, the campus life, and everything that you need to know to get to LUMS. So wait for the alumni session at 2 p.m. But after that, we have to close with math and English both for standardized testing. So today is going to be the winding up day, and it's very important that you stay tuned with us so that जो हमने 3 दिन में सीखा है हम उसको अच्छी तरह से summarize और wrap up करके आपको एक पर्ची दे सकें जिसको देख के आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, चलें. बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू. Thank you.